फॉर द ईयर कि अगर तो हमें रिस्क फैक्टर्स की बात करनी है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, कोई ट्यूबल सर्जरी हो, चांसेस ऑफ रिकरेंस हो, इफ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस 1 एपिसोड इज 15%, in previous 2 episode 30%. Most common risk factors is salpingitis, PID includes salpingitis, oophorytis, endometritis. Other risk factors include IVF, ERT, smoking. ठीक है, कोई अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस हो, इनिटेशन इनसाइड द ट्यूब हो, that is endometritis and appendicitis. That is the theory of retrograde menstruation. What is the risk factors for PID or the sexually transmitted diseases? Sexually transmitted disease. Salpingitis, isthmica nodosa. The zygote can fall in one of the pockets of the fallopian tube and implant there. Zygote can fall in one of the pockets of the fallopian tube and it can implant there. If we this is a condition in which the fallopian tube is having constrictions and or having bulges in which the zygote can fall. If we talk about the role of contraceptive in ectopic pregnancy, there are some of the contraceptive that can lead to increased risk of ectopic pregnancy. We know that some of the assisted reproductive technologies are also there that can lead to the risk of ectopic pregnancy. If there won't be any risk of ectopic pregnancy, the overall chance of any type of pregnancy would be very less. Okay, but if there is a failure, like the person using contraceptive, if there is a failure, then there's a high chance that due to contraceptive, if the pregnancy is there, that it could be an ectopic pregnancy, right? And the most common it is seen in tubectomy after permanent solution of contraceptive. You are saying that it is having the highest chances of ectopic pregnancy. Tubectomy, IUCD, POP, progesterone only pills. Most common is tubectomy, IUCD, POP, progesterone only pills. That is progesterone, Mirena, copper, IUCD. These chances of are oral contraceptive pills with vasectomy failure. If we talk about the symptoms of ectopic pregnancy, the most consistent symptom of the ectopic pregnancy is a pain in abdomen. That is a ruptured ectopic pregnancy, unruptured ectopic pregnancy. This is hemoperitoneum, which irritates the diaphragm, and this is unruptured ectopic pregnancy, which is the stretching of the fallopian tube. Which of all is the most consistent symptom of the ectopic pregnancy? First of all, is that there is a pain in the abdomen. There's a pain in the abdomen, that is ruptured ectopic pregnancy. Then we have the unruptured pregnancy, that is stretching of the fallopian tube. In ruptured ectopic pregnancy, there could be hemoperitoneum, which irritates the diaphragm. Shoulder tip pain is there. This is also known as Danforth sign, right? And of course, if the if we are having an ectopic pregnancy, it could get ruptured, it could not get ruptured. If it is not rupturing, of course it is stretching the fallopian tube, and if it is ruptured, that means it has disrupted the fallopian tube. It's just destroyed the structure, and there is a hemoperitoneum, and it also irritates the diaphragm, and there is a shoulder tip pain, which is also known as Danforth sign.
Okay, there is a shoulder tip pain which is also known as Danforth sign. In 50% of the cases, there is a triad. There would be pain in the abdomen, there will be bleeding per vaginum, and there would be amenorrhea. Amenorrhea would be there, of course, because she is pregnant. Along with that, it is ruptured, so there would be bleeding per vaginum, right? And like it won't be menstrual flow, it would be bleeding per vaginum. It won't be amenorrhea, means the menses are not there, and there would be pain in abdomen also. And when you're getting when you know that two reactions are there, okay, which are brought by the progesterone during the pregnancy. First is the decidual reaction, that is to convert the endometrium into decidua, which is seen in intrauterine and ectopic pregnancy. And the second is area stellar reaction, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लार्ज ग्लैंड्स होते हैं, इन एंडोमेट्रियम में अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, हाउमनेट सेल्स होते हैं, ठीक है. और दीज आर सीन इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलर प्रेगनेंसी. In patients of ectopic pregnancy, you will see progesterone is present in very less amount. So because of that, the decidua is shed in the form of decidocast and is made up of decidua vera. If we are talking about the signs, that is decidocast, cervical motion tenderness, differential diagnosis PID, and there is a presence of adnexal mass. ओके, सो बेसिकली वो कहता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो देयर वुड बी टू साइंस. पहला साइन होता है जब वो डेसिडा में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं डेसिडल रिएक्शन. दूसरा होता है एरास्टेलर रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, अबंडेंट साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, ठीक है. और ये भी दोनों प्रेगनेंसी में इंट्रायूट्राइन में भी देखा जाता है. टॉपिक में बेसिकली वही कहना चाहता है कि डेसिडल रिएक्शन और एलास्टेलर रिएक्शन दोनों इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोनों में देखा जाता है. परंतु एक चीज़ और देखी जाती है, दैट इज़ डेसिडोकास्ट. डेसिडोकास्ट को हम डेसिडो जो विच इज़ मेड अप ऑफ डेसिडोवेरा, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो उनसे डेसिडो होता है वो शेट ऑफ हो जाता है आफ्टर द प्रेगनेंसी. क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट तो होता है बट थोड़ी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इस वजह से क्या होता है कि डेसिडो जो होता है वो शेड हो जाता है. डेसिडो इज शेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिडोकास्ट. और वो किस चीज़ से बना होता है, वो बना होता है डेसिडोवेरा से. अगर हम इसे साइन देखें तो इसमें कौन सा होता है, डेसिडोकास्ट होता है. इसमें सर्वाइकल मोशन की टेंडरनेस हो सकती है इसमें. और हमें ऐसा लगेगा कि क्योंकि सर्वाइकल मोशन की टेंडरनेस है, डेसिडोकास्ट है, देयर कुड बी presence of adnexal mass, तो हमें ऐसा लगेगा कि मे बी देयर इट इज़ अ PID, बट इट्स नॉट PID, इट्स एक्चुअली ectopic pregnancy, and this is the decidocast which has come out, and there could be adnexal mass and cervical tenderness. So how will we manage or diagnose that okay, there is an ectopic pregnancy which has ruptured? First of all, we know she is pregnant, so she would be having amenorrhea, plus she will present to me like in a pain in abdomen and shock like symptoms or bleeding per vagina, okay. And so I will go for urine pregnancy test. I'll say it's positive, and so why is it bleeding? There could be ectopic pregnancy that could have ruptured, right? And she's showing signs and symptoms of shock. It could be present or not could be present. First is I'll go for laparotomy, right? And laparotomy is preferred because if the vitals are stable, and if the vitals are not stable, then only we'll go for the laparoscopy. I have spoken it the opposite way. Laparotomy, that is, I will open the abdomen at that time and just open the abdomen and take out that piece of product of conception out, and would join the fallopian tubes, and
this I can only do when I know the vitals are unstable, that the patient is in shock, and the patient is bleeding per vagina and it's not in a good mental status. So I will do a laparotomy, but I know the patient is very stable or there's no sign and symptom of shock, so I can also go laparoscopy, but I can only do when the signs and symptoms of vitals are stable. She's having no symptoms like that, then only I'll go for the laparoscopy. And if we talk about the surgery of choice, we have the ruptured ectopic, and remove the tube which is damaged, salpingectomy, whether the female is nulliparous or multiparous. Okay, which tube is damaged, I will remove that tube. Okay, whether the female is having the first pregnancy or multiple pregnancy, nulliparous or multiparous, you will remove the tube which is damaged. In the case of ruptured ectopic pregnancy, you will go for salpingectomy. Okay. And if suppose I do a laparoscopy and I see that no, it's not ruptured, it's just bulging of the fallopian tube and the growing of the fallopian tube because of the presence of the zygote inside it, but it's not still ruptured, so I can go for I can go for the medical management, I can go for the expectant management, and I can also go for any other surgery rather than salpingectomy. And in case of if they ask you that when you are doing this surgery, you are removing the fallopian tube, do you remove the ovaries? Why will you remove the ovaries? You will never remove the ovaries. In the case of ruptured ectopic pregnancy, you will only remove the part which is damaged, that is one side of fallopian tube. Okay, you will never remove the ovaries. And like, how will you confirm, like you are seeing the adnexal mass, you are seeing, yeah, like, and if you want to do cultosynthesis, you want to know that okay, fluid is present in the posterior fornix or not. Okay, a needle is passed via posterior fornix into the pouch of Douglas, and if the blood is non-clotting, that means it is hemoperitoneum. And if the blood is clotting, a needle pierced in artery. Okay, if the blood is not clotting, that means it is hemoperitoneum, that means the blood is coming from a ruptured ectopic pregnancy, right? But if the blood is clotting, that means it is coming from an artery of the female organ. And this is how we do the cul-de-sac is present, and the procedure is known as cultosynthesis. We are taking out the blood which is present in the posterior fornix, that is posterior pouch of Douglas. And although there could be blood present in the posterior pouch, but this does not confirm it is a ruptured ectopic. Like, there could be other reasons also that leads to hemoperitoneum. There's not only one single cause that is confirmatory. If this is there, then only blood would be there. No, it is one of the reasons that blood could be there, but it's not confirmatory that it is a ruptured ectopic pregnancy. Secondly, if a lady comes to me, right, and I'm in the first trimester, I'm the gynecologist, I'm doing the transvaginal ultrasound, right, and I see that the uterus is empty. I know the UPT is positive, right, and I see that HCG, it is rising, but it's not doubling. Okay, it's not doubling, so I found something fishy. The HCG is also not doubling, and the uterus is also empty, right? So this is empty uterus. It shows that UPT is positive, right? UPT is positive, then HCG not double, and empty uterus. So, or there could be a pseudo-gestational sac also present there, right? So when I check the tubes and adnexa, I see a gestational sac present there, and I see a cardiac activity is present inside the tubes, and this sign is known as Beagle sign. When I find the Beagle sign, I know this is a ectopic pregnancy, and I have seen it with the ultrasound, but now I need to confirm it through some test. What test would I go for? I will go for Doppler. I'll go for the Doppler test, and there would be a ring of fire appearance inside the fallopian tubes.
And other than that, I can also clinically feel that there's complex adnexal masses. If we talk about the decidua, I know the 3 type of decidua there, right? And basalis, blastocyst to myometrium, capsularis, blastocyst to uterine cavity, and paritalis, rest of the decidua. सेंट्रल कम्प्लेक्स कैविटी, ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ, यहाँ पे हो गए बेसालिस, यहाँ पे हो गए कैप्सुलैरिस, राइट। ये ग्रो करता गया बाद में फ्यूज हो जाता है और बाद में यूट्रस के अंदर यही रह जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट intradecidual signs on ultrasound, then I told you that intradecidual sign is the first sign which is showing that there is an interstitial implantation. This is the first sign of pregnancy, of intrauterine pregnancy. Intradecidual sign, right? Intradecidual sign is the first sign of interstitial implantation. You will see a hyperechogenic central cavity complex. This is the gestational sac, and this is the central complex cavity complex. This is the intradecidual sign. And then I'll see the double decidual sign, that is because of the formation of the decidua. This is double decidual sign, and it would be there would be bulge of the line, and I could see a ring inside and a ring outside. So the ring which is formed near to the gestational sac is because of the capsularis, and which is formed beyond is because of the paritalis, which is just with that is capsularis, and beyond is paritalis. Basalis is not in the ring of double decidual size. If you want to differentiate, okay, I'm seeing is ultrascopically ultrasound, I'll see that how can I differentiate between two gestational sac and pseudo-gestational sac. First of all, in two gestational sac, you will see intrauterine pregnancy would be there, and double decidual sign would be there, and double ring sign would be present. You will see it is eccentrically located and it is increasing in size, right? And cardiac activity would also be present. But in case of ectopic pregnancy, you will see there will be thick decidua, and it is centrally placed, and the size remain constant. It's not increasing in size. And if you take about the double ring sign which is there, that would be absent. Along with that, you will, when you checking in the fallopian tubes, you will see the Beagle sign is present there. That is, cardiac activity is present inside the fallopian tubes. And this was trans abdominal. If you are finding in TVS, I will see that now I need to check for the HCG's level, right? I know that HCG level, it doubles every 2 days, right? So, and I should also know a particular range of HCGs there, that at this level of HCG I will see a gestation sac. You know about that. At the level of 1500 international unit per liter of HCG, I will see a gestational sac at transvaginal sonography. And when the HCG level is around 6500 or more than 5000, I will see a gestational sac and trans-abdominal sonography, right? So, in such cases, when I see that although the present level is more than 1500, but I am not seeing transvaginally any gestational sac, this is fishy, because it should be present. It's not present there. That means it is not ectopic pregnancy. It is not a intrauterine pregnancy. It is pregnancy is there, but it's not intrauterine. And then I need to just confirm it, right? So I will repeat the beta HCG level after the 48 hours, and then I see that the level is not rising. Level is not rising. Even the level can go down. No. I will repeat the beta HCG and I see that the level is not increasing, right? And but if the level is increasing, right, in approximate more than 66%, it would double in 2 days. Remember that, right? But if it is ectopic, it's not doubling, okay? And if the HCG is doubling, it is an early intrauterine pregnancy. If the HCG is decreasing, it is an abortion. And if the HCG is not doubling, it means that it's an ectopic pregnancy.
Now I've confirmed, I'm damn sure it is an ectopic pregnancy. How will you manage that? How will you manage the unruptured ectopic pregnancy? First of all, you need to go for the expectant management, then you need to go for the medical management, and then the surgical management. First of all, I will wait and watch. There could be a risk of rupture, and this is not preferred. Second treatment, I can go for the methotrexate. Why? Methotrexate, I know it would kill the fetus. Methotrexate is the one which will kill the fetus. After that, I could give prostaglandin. That was it would just be like a abortion, like medical management. I'm doing an abortion because it is ectopic pregnancy, and it would either rupture or damage the mother only. Okay, and the third option is I can do it laparoscopy because I know the vitals are stable, so I can go for laparoscopy. Vitals are stable. Vitals unstable. Then preferred. In rupture. Talk. It is preferred in unruptured. So if you are talking about the preference, if it is an unruptured, I will look it into laparoscopically, but if it is ruptured, I will go for laparotomy because I have to remove out the I will go for self-injectomy, so laparotomy is a better option, right? And before doing some major surgery, I also need to know that I should be sure enough that it is not it is unruptured, right? And the patient is hemodynamically stable. If the patient is not hemodynamically stable, I need to go for urgent surgeries, right? And I can I can go for medical management. Like if I see the cardiac activity is preferably absent, HCG's level is less than 5,000, and the size of ectopic pregnancy is less than 4 centimeter. So these are the conditions when I know that yes, you can go from basically first trimester abortion because HCG's level is not rising and it's not in the right position. Moreover, the fetal cardiac activity is also not present there, and you can wait and watch if the size is less than 3 and beta HCG level is very less and cardiac activity is absent and is decreasing, like beta HCG is decreasing, but it is not preferred thing, राइट. मेडिकल मैनेजमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं, वही मेथोट्रेक्सेट 50 mg देंगे उसको, जो फिर उसको किल कर देगा, ठीक है. डे 1 पे उसका बीटा एचजी हम चेक करेंगे, वो कम ही होना चाहिए, फिर उसको रिपीट करेंगे बीटा एचजी का, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर बीटा एचजी बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेस देन 15% हो गया है, बीटा एचजी का लेवल फॉल करी जा रहा है, देयर इज़ नो कार्डियक एक्टिविटी. And now I see that the procedure is successful. It has killed the fetus and it will be moved out in the or in the menstrual cycle. But if I see that the HCG level is not falling below 15% and it is still constant or just increased by 15%, or the fall is less than 15%, then between day 4 and 7 you need to give methotrexate injection again. Okay,
Okay, on day 1 and 4 and 7. Okay, so this is a cycle. Like on day 1 she will come, you'll check and you will give the methotrexate injection. On day 4 you'll check the beta hcg. Day 7 you check the beta hcg, and if you find that there's no decrease in beta hcg level, then you will give the methotrexate injection again. Okay, and then you will record the beta hcg level, and then you will again repeat it after 7 days, right? And even then the beta hcg level is not falling, beta hcg level is increasing. That means the fetus is growing, and now you can't wait, because it is an ectopic pregnancy, and as a gynecologist you need to have certain sense that no, you can't let the pregnancy to continue, it will damage the mother. So you will go for the surgical management. And as it is an unruptured pregnancy, so laparoscopy surgery is preferred. It is also depends upon the age and the priority of the patient. Like if the family is not complete, then I will go for linear self-injectomy, which is preferred, and there is no suture on incision site which is given, and you just remove the ectopic by hydrodissection. Okay, linear self injectomy is done. You just open the tube, you just by hydrodissection pull out the fetus and leave the fallopian tube as it is. And this is done when the family is not complete. And when the family is complete, right, um, and another procedure, you can give the sutures also at the side. And the second procedure, when you know the family is completed as ectopic pregnancy and she doesn't want to have more pregnancies in the future, it's dangerous condition, go for self-injectomy. But if the family is not completed, then in unruptured we have an option for linear self-injectomy, where you just open and by hydrodissection you are taking the zygote out. If you are if you think that the only the ectopic site is in the fallopian tube, then you are wrong. It could be in the cervix also, it could be in the abdomen also, it could be inside the ovary also, it could be in the fallopian tube में आके यूट्रस में लगना होता है, बस यूट्रस में ना लगे वो सर्विस में लगी. ओके, वो जाके फेलोपियन ट्यूब से जब वो निकल रही है वो ओवरी में ही फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ, या वहीं पर जाके लग गई, तो ओवेरियन हो सकती है. बहुत ही रेयर केसेस में वो हीमोपेरिटोनियम से हो सकता है कि अब्डोमेन में ही लग गई है, तो अब्डोमिनल इक्टोपिक भी हो सकती है. ठीक है, तो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ self-injectomy in ectopic? There could be ruptured ectopic, unruptured ectopic if the family is complete. Size of the ectopic is more than 5 cm. Hemostasis cannot be maintained. Heterotropic pregnancy. Earlier the incidence was 1 in 3,000 in 30,000 pregnancy. Now the incidence is very increasing due to the ART in IVF. Earlier क्या होता है कि 30,000 में एक प्रेगनेंसी होती थी, पर आज कल क्या होता है कि वो मुझे पूछें कि कौन सी कंडीशन में आई कैन गो फॉर self-injectomy, that is removal of the fallopian tube I'm doing if I see this is ruptured and the fallopian tube is damaged. Second, if I see that the family is complete, right, then I can go for it. Other side, we see that the hemodynamically patient is not stable, hemostasis is not maintained. If the size of ectopic is very large, it is more than 5 centimeters, and if it is a heterotropic pregnancy, then these conditions you will go for surgery, that is self-injectomy. ठीक है, and this was a ruptured and unruptured ectopic pregnancy. Let me do some MCQs of this topic.
मोलर प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो देयर इज जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़, जिसको एच मोल कहते हैं. हो सकता है कि जैसे मोलर प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो होती है जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक मोल है, वो इन्वेजिव नहीं होता, वो मतलब कह लो कि मेटास्टेटिक या न्यूप्लेजिया नहीं होता, पर हो सकता है वो न्यूप्लेजिया, वो दूसरी टाइप होती है, दैट इज जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक न्यूप्लेजिया. ठीक है. अगर तो जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज़ है तो उसमें दो तरीके की हो सकती है, या तो पार्शियल मोल या तो कंप्लीट मोल. परंतु अगर वो न्यूप्लेजिया है तो वो इन्वेट करेगा, तो वो जाता है इन्वेजिव मोल. वो होता है कोरियोकार्सिनोमा, वो होता है प्लासेंटल साइट ट्रोफोप्लास्टिक ट्यूमर, वो होता है एपिथेलियल ट्रोफोप्लास्टिक ट्यूमर. Placental site trophoblastic tumor, epithelial trophoblastic tumor. If we go to the molar pregnancy, we see that the molar disease, it could be uh, in molar pregnancy, the two diseases and one neoplasia, that is partial mole, complete mole, and invisible. In these, we will see that the chronic villi are present, but in the other, they are so much invasive, like in the choriocarcinoma, placental site trophoblastic tumor, and epithelial trophoblastic tumor. We see that even the chorion is also not present, no chronic villi is absent. And if we talk about what could be the risk factors, first of all, as I told, the disease is a benign condition, and it is having a malignant potential. It is pre-malignant condition, and more common it is in the developing countries like in the Asians, and maximum incidence is seen in Philippines. And but if we talk about the risk factors, that could be first, increased maternal age is there, Asian population is there, deficiency of vitamin A is there, increased deficiency of vitamin A, and increased maternal age. That if there is any previous history like okay, if we are talking about दैट मोलर प्रेगनेंसी में चांसेस ऑफ रिकरेंस बहुत हाई होते हैं. अगर पहले एक मोलर प्रेगनेंसी रही तो चांस ऑफ रिकरेंस इज 1 to 4%, और अगर पहले दो प्रेगनेंसी रही तो चांसेस ऑफ रिकरेंस इज 25%. If we talk about it undergoes proliferation, right? And what happens if some space to the inner cell mass is given,
that is known as partial mole. That is, some trace of the inner cell mass is given. So some of the inner cell mass we know as is body, the forming the body. So some of the fetal parts are present, whereas in some of the incomplete mole, no space is given for the inner cell mass to grow. So there is no fetal parts which are present in the complete mole. What happens under the proliferation of trophoblasts? As we know, the trophoblast is further divided into syncytial trophoblasts and cytotrophoblast, right? And we know that the cytotrophoblast is the one, if no invasion takes place of cytotrophoblast, there could be PAH, right? So this is seen in these mode of pregnancy, that there is PAH because there is no conversion of trophoblast, there is no invasion of cytotrophoblast. Secondly, we see that the height of the uterus is growing more than the gestational age. This is very fishy, that the height of the uterus is growing more than the gestational age. And thirdly, we see that the as a syncytial trophoblast is also rising very much. So what happens, the syncytial trophoblast is known for releasing the HCG, and syncytial trophoblast will cause, okay, just revise the previous topic. syncytial trophoblast हमें कौन पढ़ा था? hormone factor with placenta. साइटोट्रोफोब्लास्ट कौन सा होता है? वो कोरियन फंडस बनाता है, कोरियन लीव बनाता है और पीआईएच को प्रिवेंट करता है. साइटोट्रोफोब्लास्ट कौन सा होता है? वो ये नहीं कर पाता है उसमें, और सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट पे इंक्रीज हो जाता है. तो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली हार्मोन फैक्ट्री होता है प्लासेंटा की. ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर तो एच इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमें पता है कि एच इंक्रीज होने से एक तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम हो जाएगा. एच अगर इंक्रीज़ हो जाए तो हमें पता है एच का सिमिलर रोल है TSH के साथ, LH के साथ और FSH के साथ. और इसके क्योंकि अल्फा सब यूनिट सिमिलर है तो TSH भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है. तीसरी चीज़ ये होता है कि क्योंकि ये सिमिलर है टू द LH तो थीका ल्यूटिन सिस्ट भी बन सकता है. ठीक है, सो इसमें क्या हो जाता है कि थीका ल्यूटिन सिस्ट आ सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, और HCG इंक्रीज होने के कारण हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम हो सकता है. फिर उसके बाद ट्रोफोब्लास्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो PAH हो सकता है. और हम देखते हैं कि एक तो ना ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हुई है ना वो हुआ है. और बट जो क्लिनिकल में देख रहे हैं जो उसके फंडस की हाइट है, जो उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज़्यादा उसका हाइट ऑफ द यूट्रस है. So this is also something fishy. So as a gynecologist, you will need to know. If we talk about more about theoretical basis, what is a partial mole and what is a complete mole? The partial mole is the one which is triploid, and the complete mole is the one which is diploid in 90% of the cases. What happens in a partial mole? There is actually a triploidy, and complete mole it is diploid. In triploidy, there is extra genetic material that is paternal in origin. Okay, so partial mole, if you're talking about, it is diploid because of the dispermic. But if you're talking about complete mole, 90% of the cases में diploid होता है, but 10% cases में ये भी dispermic हो सकता है. That is one ova is getting fertilized by two sperms.
If we talk about histopathologically, that we know that the hydropic degeneration जो सी पार्शल उसमें कम होगी, फीटल पार्ट उसमें प्रेजेंट होंगे, और उसमें ट्रोफोब्लास्टिक स्कैलोपिंग प्रेजेंट होगी, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होगी. पर जो सा दूसरा है, हमें पता है कि उसमें डीजनरेशन बहुत ज़्यादा है, ना ही उसमें कोई फीटल पार्ट प्रेजेंट है, ना ही उसमें ट्रोफोब्लास्टिक स्कैलोपिंग है, ना ही उसमें कोई इंक्लूजन बॉडी. उसमें सब कुछ तबाह हो चुका है, उसमें सब कुछ डीजनरेटेड है. ठीक है, और बस वो अपना ही ग्रो करी जा रहा है अपना जो भी मास है. फिर उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो सा कंप्लीट मोल होता है ना, उसमें HCG का लेवल बहुत ज़्यादा होता है. तो जो भी सिम्टम्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होंगे. जैसे उसमें हाइपरमेसिस ग्रेविडेटम होगा, उसमें PIH होगा, उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस होगा, उसमें फंडालाइट ज़्यादा ग्रो करेगी, उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं. पर अगर हम पास्ट मोड उसमें कम होंगे. ठीक है, एंड सिम्टम्स आर लेस और ईदर एब्सेंट ऑल्सो, एंड यू कैन सी दैट द ब्लीडिंग हो सकती है, पर वेजाइनल जैसे एक्सपल्शन हो सकती है ग्रेप लाइक वेसिकल्स की. तो ग्रेप लाइक वेसिकल्स होंगे जो बेसिकली पार्शियल मोल होते हैं, वो रिलीज आउट होते हैं. तो बेसिकली डिफेक्ट आता है कैरियोटाइपिंग में. पार्शियल में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आता है जो पैटर्नल होता है इन ओरिजिन, और कंप्लीट में क्या होता है कि इंटायर जेनेटिक मटेरियल जो सा होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है. अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें पहली बात तो अगर हमें ग्रेप लाइक वेसिकल्स दिख रहे हैं तो पार्शियल मोल भी होंगे. दूसरी चीज़, अगर हमें हो सकता है कि हमारा मिस्ड अबॉर्शन हो. राइट, मिस्ड अबॉर्शन में ये होता है कि फीटस डेड है, नो कार्डिक एक्टिविटी, एंड फीटस अंदर ही है, एंड फीटल फंडालाइट जो सी है वो डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू फीटल पीरियड ऑफ जेस्टेशन के. पर जब हम कंप्लीट मोल देखेंगे तो कंप्लीट मोल में क्या होगा, वी विल सी द स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस. सो द स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इज कमिंग इन द कंप्लीट मोल. अगर हम लेवल ऑफ HCG की हम बात करें, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही कि ऑब्वियसली जो है कंप्लीट मोल इसमें HCG बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, तो उसका लेवल 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से भी हाई होगा. परंतु वो जो सा कंप्लीट मोल होगा उसमें भी हाई होगा, पर थोड़ा सा कंप्लीट मोल के कंपैरेटिवली कम होगा, जैसे लेस देन 10.5 होगा. अगर तो हमें ये भी पता है कि जो सी HCG है वहाँ पे सारे सिम्टम आ सकते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस, PIH और हाइपरमेसिस ग्रेविडेटम, और उसमें थीकालुकियंसिस भी फॉर्म में हो सकती है. पर जो सी पार्शियल मोल है उसमें नहीं होती. तो बेसिकली जितने भी सिम्टम्स हैं ना वो सारे एग्जैजरेटेड सिम्टम कंप्लीट मोल में ही नज़र आ रहे हैं. अगर हम चांसेस ऑफ प्रोग्रेस को देखें टू न्यूप्लेजिया, वो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा है उसके ज़्यादा चांसेस हैं, 15 से 20%. कोरियोकार्सिनोमा के 4%, उसके हैं थोड़े लेस चांसेस, 3%, 1%. अगर हम उसकी इम्यूनोस्टेनिंग करें दोनों की, तो हम ये देखेंगे कि जौन सा पार्शियल मोल है ना उसमें इम्यूनोस्टेनिंग KIP2 की, P57 की फिर भी पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि मैटर्नल जीन जौन सा है वो प्रेजेंट है. परंतु अगर हम इम्यूनोस्टेनिंग करेंगे P57 की और KIP2 की, तो उसमें हम देखेंगे कि वो नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि कोई मैटर्नल जीन ही नहीं है, सिर्फ पैटर्नल जीन है जो डुप्लीकेट करी है, डबलिंग हो गई है. ठीक है, एंड ये हमने सबसे पहले क्लिनिकल फीचर से भी दिखा लिया. ठीक है, फिर हमने ट्रांसजेंडर सोनोग्राफी की तो मुझे इसमें सनस्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नज़र आई. ठीक है, बीटा HCG लेवल बहुत वो भी स्टैंडर्ड है. ठीक है, एंड उसके अलावा हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा ऑब्वियसली दिस इज अ मोल. अब मेरे पास पेशेंट आ गए, मैंने डायग्नोज भी कर लिया, मैनेज कैसे करूँगी? सबसे पहले तो ये करना है कि you know this is not a condition that needs to be carried forward. You need to do suction evacuation irrespective of the gestational age of the mole of pregnancy, and if required you can also go for curettage, and then this could give rise to cancer in the future. You will set the sample for histopathological examination.
ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, इवैक्यूएशन करने से पहले तुम उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ एम्बोलाइजेशन, सो यू विल provide the oxytocin drip, then you will cannulate the patient, you will check if it is NTD or not. If it is RS negative, then you will give the NTD, and you will just suction evacuate, and if left you can curettage it. And what if there's a complication, like if there is thecal lutein cyst present, then after the evacuation of the molar pregnancy, you will see that the thecal lutein cyst will automatically regress because it was due to presence of high level of HCG. Secondly, if you know that it has progressed to a certain amount, that it has converted into chocolate cyst, and now you need to treat it laparoscopically. Now you need to go for the laparoscopic removal of the chocolate cyst. Okay, what are the conditions in which we will have to do hysterectomy? Like in a female who's above 40 and has completed his family, and now I know that if the uteruses remain inside, this could lead to the cancerous condition, right? It might lead to it might result in cancer. So I will remove the uterus. Secondly, if I know this uncontrolled hemorrhage, and thirdly, if I know it is an invasive mole, right? In all the like neoplasms, obviously I will have to remove them. If it is an invasive mole, I have to remove them. If it is uncontrolled bleeding or hemorrhages there, and thirdly, if I know that family is complete and it is of a certain age that no requirement of the uterus is required. Okay, after the suction evacuation or hysterectomy, you will check the beta HCG level. As a gynecologist, it's your responsibility to check the beta HCG level. If the beta HCG level is not decreasing, that could risk choriocarcinoma. That means it could result in choriocarcinoma, it could result in a neoplasm. How will you follow up a molar pregnancy? Firstly, you will check the beta HCG level weekly till 3 consecutive normal values, and then monthly for 6 months. You will check the beta HCG level weekly till you get 3 normal values. Like you will do not normal, you will do not normal, you will do not normal, until 3 normal values are coming. You will do it, and after that, if the normal values have come of beta HCG, then you will tell that, listen, I need to do it monthly, right? After every 6 months, you need to come. If she's a lady and want to conceive again, then I will tell, listen, you need to your pregnancy, you should avoid pregnancy. Like you say pregnancy is contraindicated after molar pregnancy. Why? Because during pregnancy the beta HCG level will increase, and in molar pregnancy also beta HCG level will increase. So how will you know that whether the patient got treated or not, right? So that is the thing. And what is the contraception of choice? Contraception of choice is oral contraceptive pills, right? And because you don't want to disturb the uterus right now, so you will go for the oral contraceptive pills. Thirdly, if I go further, that how much time it would take for the beta HCG level to become normal. In case of partial mode, it might take 7 weeks, like it would take around nearly 2 months, and in case of complete mole, it would take around 9 weeks after 2 months. So if I know that the patient is having a high risk of chemo, or the beta HCG level are not going down, then I will give the chemotherapy, prophylactic chemotherapy. In what patients? If the age was if the age is above 40, because age is one of the risk factor for the neoplasms. And if the beta HCG level is more than 10^5, if the uterine size is very large, and if the thecal lutein cyst was also very large. So if a thick cyst was large, if the uterus was large, if the beta HCG level was large, if the age is large. So what drug would you give?
you will give in chemotherapy methotrexate and actinomycin D. Sometimes jaundice could also be present, and in that case you will give actinomycin D. So basically you are going to give methotrexate prophylactically, and in the first trimester abortion you are also giving methotrexate. Okay, let's have some water. You can do it. You will do it. Now we coming to molar pregnancies in case of gestational trophoblastic neoplasia, right? If it is a case of gestational trophoblastic neoplasia, you will see that beta's HCG level is not decreasing and is either constant or increasing on day 1, 7, 14 and 21. On day 1, 7 and 21, the beta HCG level can also increase or it could be plateau. And if we are going for histopathological examination, it has confirmed that it is a choriocarcinoma. And other thing is, even after giving the treatment, the beta HCG level is not coming down. First is if the beta HCG level is rising, and secondly if the beta HCG level are plateau. If the beta HCG level is rising, if the beta HCG level is plateau, and thirdly, if it is confirmed on histopathological examination that it is a choriocarcinoma, and fourth, even after treatment the HCG level is not coming down, that means it is a choriocarcinoma. And normally एक partial मोल में after 7 weeks normal and complete मोल में 9 weeks में normal, बट यहाँ पे नहीं आ रहा. तो अब मेरे पास जो केस आएगा वो कैसे आएगा? एक तो मैंने ऑलरेडी ट्रीट किया है, हिस्टोपैथोलॉजी कर दिया है, नया केस आ रहा है, उसके पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होगी पर वजाइना में. हो सकता है वो शॉक में हो क्योंकि वो इन्वेसिव भी हो सकता है कि यूट्राइन सब इन्वोल्यूटेड हो. साथ में हमें ये भी पता है कि थीका लूटेन सिस्ट होती है, हमें ये भी पता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है बिकॉज इट इज़ ए कैंसर. सारी चीज़ें हाइपर एग्जैजरेटेड होंगी, ब्लीडिंग होगी, सिस्ट हो सकती है, पेन हो सकती है, शॉक में हो सकती है, बस ये सब कुछ हो सकता है. इन्वेजन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि सब इन्वोल्यूशन भी हो सकता है यूट्रस का, ठीक है. एंड मेटास्टेसिस हो सकती है, जैसे हो सकती है वो लंग में मेटास्टेसिस कर जाए. तो मोस्ट कॉमन साइड जो जिसमें वो करता है वो लंग्स में करता है, उसके बाद जाके वो वजाइना में करता है, फिर वो पेल्विस में करता है. कि मतलब वो इतना वो शातिर है, उसने पहले उसकी सांसें ही रोकनी है मोलर प्रेगनेंसी में. तो कोरियोकार्सिनोमा ने सबसे पहले मेटास्टेसिस की, पहले तो यूट्रस में इन्वेड किया, यूट्रस के बाद उसने इन्वेड कर दिया उसके लंग्स को, फिर उसके वजाइना को, फिर उसके पेल्विस को. द मोस्ट कॉमन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लियस आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी इज इन्वेसिव मोल एंड इज ऑल्सो नोन एज कोरियोडेनोमा डिट्रूसेंस. इसका एक इन्वेसिव मोल का एक और नाम दिया हुआ है कोरियोकार्सिनोमा डिट्रूसेंस. ये प्रॉपरली इन्वेड कर जाते हैं हमारे मायोमेट्रियम को, और इसकी ट्रीटमेंट में हमें हिस्टेरेक्टमी ही करनी पड़ती है. और पर इसकी खास बात ये है कि बाकी सब में क्या होता है कि क्रॉनिक वाले प्रेजेंट नहीं होते जैसे बाकी न्यूप्लेजियम, पर ये वाला न्यूप्लेजिया इन्वेसिव मोल में क्रॉनिक विलाय भी प्रेजेंट होते हैं. अगर हम कहें तो मोस्ट कॉमन मोलर प्रेगनेंसी के बाद कौन सा न्यूप्लेजियम होता है? कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है.
फिर वो कह रहे हैं कि फुल टर्म डिलीवरी के बाद ही हाई रिस्क ऑफ कोरेकार्सिनोमा डेवलप होता है। अगर हम ये बात करें कि हाई रिस्क कोरेकार्सिनोमा कौन सा होता है, हाई रिस्क, अच्छा वो बेसिकली ये कह रहा है कि वो कोरेकार्सिनोमा जो एक मोलर प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होता है उसमें फिर भी लो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। पर अगर वो कोरेकार्सिनोमा जो फुल टर्म प्रेगनेंसी है, लेडी एकदम प्रॉपरली फुल्ली टर्म प्रेग्नेंट है और उसको यही नहीं पता लगा कि कोरेकार्सिनोमा है, ठीक है, मतलब एक फुल टर्म प्रेगनेंसी पे कोरेकार्सिनोमा जो सा होता है, दैट इज़ अ वेरी हाई रिस्क केस में भी, लाइक द लेडी feels like she is pregnant, right, and it's reaching the full term, and then she realizes it's a choriocarcinoma. The gynecologist says it's a choriocarcinoma. That is a very high risk condition. It could have metastasized to other organs also. उसके बाद वो कहता है कि मोस्ट कॉमन भी कोरियोकार्सिनोमा ही होता है। अगर कोई जैसे फुल टर्म डिलीवरी होगी तो उसके बाद कोई डेवलप हो रहा है तो वो कोरियोकार्सिनोमा है। कोरियोकार्सिनोमा का जो ट्यूमर मार्कर होता है बीटा एचसीजी लेवल, वही हमें पता ही है कि मोलर प्रेगनेंसी सारी जितनी भी होंगी वो बीटा एचसीजी लेवल उनका मार्कर है। तो ये मेटास्टेसिस लंग की कैसे करता है, ये जाता है खून के थ्रू, हिमाटोजेनिस, एंड सबसे ज़्यादा इसको पसंद है लंग। 75% ऑफ द केसेस में ये लंग पे जाता है, फिर वेजाइना, फिर पेल्विस। तो जो चीज़ें पास में इसको वो पसंद नहीं है, इसको दूर वाली, इसको सांसें खींचनी है। अगर हम लंग मेटास्टेसिस की बात करें तो लंग मेटास्टेसिस कोरियोकार्सिनोमा के स्टेज 3 में होता है, मतलब अब हाई स्टेज पे पहुंच चुके तब जाके लंग इन्वॉल्व हुआ है। और जब हम एक्सरे कराएंगे ना लंग का तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कैनन बॉल अपीयरेंस है या फिर उसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है, जो एक्चुअल में कंप्लीट मोल में यूट्रस के अंदर थी। तो एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, लंग मेटास्टेसिस, कैनन बॉल अपीयरेंस और स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। और जो सेकेंड मोस्ट साइट है वो कौन सी, कोरियोकार्सिनोमा की वल्वोवेजाइनल, वो हो जाती है स्टेज 2 में। होता क्या पे है, जस्ट बिलो द यूरेथ्रा, और इसको सब यूरेथ्रल मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। सब यूरेथ्रल मेटास्टेसिस सीन इन कोरियोकार्सिनोमा। WHO ने एक स्कोर दिया हुआ है कोरियोकार्सिनोमा का, 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लो रिस्क और एक होते हैं हाई रिस्क। इतना याद रखें, जिनसे लो रिस्क है लो एज पे होंगे, एचसी लेवल भी लो होगा, ठीक है, और जिनसे हाई रिस्क है वो एज भी ज़्यादा होगा, एचसी लेवल भी ज़्यादा होगा। और पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जो हाई रिस्क वो होता है जो फुल टर्म डिलीवरी के बाद होता है, बाद आता है। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझने में गलती कर दी। मुझे लगा कि उस बंदी को पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई वाज मिस्टेकन देयर। आफ्टर डिलीवरी उसको कोरिया कार्सिनोम हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी उसका बीटा एचसीजी लेवल डिक्रीज नहीं करेगा, जो कि फिशी है, ठीक है। तो अगर आफ्टर फुल टर्म डिलीवरी के बाद बीटा एचसीजी डिक्रीज नहीं कर रहा, दिस इज ए हाई रिस्क केस ऑफ कोरिया कार्सिनोमा। एंड इफ आफ्टर डिलीवरी if after molar pregnancy it is occurring, then it is no risk. Secondly, अगर हम देखा जाए, लो रिस्क वो है जिसमें प्रेगनेंसी लेस देन 4 मंथ्स थी और जिसमें आफ्टर 12 मंथ्स के बाद वो डिटेक्ट किया गया, मतलब इतनी देर बाद, 1 साल बाद उसको पता लगा कि 1 साल पहले उसके अंदर बॉडी के अंदर कोरिया कार्सिनोमा डेवलप हो गया था, तो ऑब्वियसली वो हाई रिस्क होगा। और जब 1 साल बाद पता लगा तो मेटास्टेसिस कर चुका है, वो कहाँ वो लिवर में कर चुका है, ब्रेन में कर चुका है, लंग में कर चुका है। और जो लोअर रिस्क है वो उसको लंग ज़्यादा पसंद है। और जो हाई रिस्क है वो बहुत सारी जगह, मोर देन 8 जगह में मेटास्टेसिस कर चुका है। और जो लो रिस्क है वो सिर्फ 4 चीज़ों में ही करता है। और अगर इसका ट्यूमर का साइज़ देखा जाए तो लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। और अगर हाई रिस्क का देखा जाए तो मोर देन 5 होता है। और इसमें हमें फिर मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे घूम चुका है। हम एक स्कोर रखते हैं और स्कोर से पता चलता है कि ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है। तो WHO स्कोर के अगर लेस देन 6 है तो लो रिस्क है, और अगर 7 से ऊपर है तो हाई रिस्क है, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि अगर लो रिस्क है तो सिंगल एजेंट दे देंगे जैसे मेथोट्रेक्सेट, और अगर हाई रिस्क है तो मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देंगे, जिसको हम बैक शो रिजीम भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इमाको रिजीम होती है, दैट इज इपोटोसाइड, मेथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड ऑनकोविन। ओके, देख मुझे 2 नाम तो याद है, मेथोट्रेक्सेट एंड एक्टिनोमाइसिन। साइक्लोफॉस्फोमाइड भी मुझे याद हो गया, ऑनकोविन भी याद हो गया, अटोपोसाइड भी याद हो गया। इमाको इज इटोपोसाइड, मेथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड लास्ट में ओकोविन। फॉलोअप करना फॉर 1 ईयर, जो से हाई रिस्क होती है उसमें फॉलोअप करना फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिया कार्सिनोमा एंड प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर? अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अगर हम कोरिया कार्सिनोमा प्लेसेंटल साइट को करें तो प्लेसेंटल साइट से हमें ये पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी के बाद होता है, ठीक है। और कोरिया कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो दोनों में होता है, पर मोस्ट कॉमनली ये मोलर प्रेगनेंसी के बाद होता है, ठीक है। और कोरिया कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू PSTT, वो रेयर होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो कोरिया कार्सिनोमा को हम बीटा HCG से मेजर करते हैं, पर जो PSTT होते हैं उसको हम कौन से हार्मोन से मेजर करते हैं? उसको हम करते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन से और प्लेसेंटल अल्कलीन फॉस्फेटेज से। क्यों? क्योंकि वो प्लेसेंटा से रिलेटेड है ना, तो प्लेसेंटा वाले जो से हार्मोन्स हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड प्लेसेंटल अल्कलीन फॉस्फेट, ये चीज़ हमें बताएगी कि PSTT का रिस्क कितना है। आगे अगर हम जाएं तो PSTT में लेस हेमरेज एंड नेक्रोसिस होते हैं क्योंकि प्लेसेंटा के आसपास है, पर जो सी कोरिया कार्सिनोमा वो तो बहुत ज़्यादा डायमॉर्फिक सेल्स होते हैं, इन्वेसिव होते हैं, इसमें एक्सेसिव हेमरेज और नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये कीमो सेंसिटिव होता है और इस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी। पर अगर हम PSTT की बात करें तो इस पर कीमोथेरेपी बिल्कुल काम नहीं करती, ये प्लेसेंटा के हार्मोन के कारण बढ़ी जा रहा है। इसमें कल ही एक ही ट्रीटमेंट है कि इसका
प्लासेंटा रिमूव करो, हिस्टेरेक्टमी करो, यूट्रस रिमूव करो। इस पर कोई कीमो रेसिस्टेंट है, इस पर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करती। Finally, I did it. Now it's time for doing some MCQs. It was easy. It was not that tough. Let's do some MCQs. Let's see. विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तुम्हें लगता है? नहीं, पर ये भी ब्लड ग्रुप से होता है। यस,
कि मुझे था कि वो प्रेग्नेंट तो है ही, तो उसका दोनों ही मुझे गलत लग रहे थे क्योंकि उसमें थीका, लेकिन से शेयर नहीं होता, हो सकता है। पर मुझे था कि बीटा HCG तो है, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आएगा? तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है ड्यू टू द हुक की इफेक्ट। मतलब इतना ज़्यादा एक्सेसिव बीटा HCG होता है कि वो ओवर सेचुरेशन कर देता है, और उसको पता है कि इतना ज़्यादा बीटा HCG नॉर्मल नहीं है, तो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि उसको होता है कि अगर मेरी यूपीटी पॉजिटिव नहीं आ रहा तो वाई इज दिस फंडालाइट ग्रोइंग, तो कुछ फिशी है।
is molar pregnancy. Complete mole. Because it's sunstrong appearance. सनस्ट्रॉम अपीयरेंस और कहाँ पे आते हैं? कंप्लीट हेरिडिटरी फॉर्म मोल में, एक्स्ट्रा कैप्सुलर ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर में। अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाया और वो रप्चर हो जाए तब भी आता है सनस्ट्रॉम अपीयरेंस। और अगर कार्सिनोमा थायराइड हो, जैसे हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि थायराइड कार्सिनोमा पर वो लंग में मेटास्टेसाइज कर गया, तो भी सनस्ट्रॉम अपीयरेंस आता है। Female gravid 12 weeks of gestation present with complaint of expulsion of grape like vesicle for vagina. फिर तो ये थी कलोटिन सिस्टी लग रही है। ओवरी के अंदर है ना, दिस इज द कलोटिन सिस्ट, क्योंकि उसने बताया कि दिस इज लेफ्ट ओवरी। एस्पिरेशन करोगे या लेप्रोस्कोपिक ओवरेक्टमी कर दोगे? एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ओवरेक्टमी कर देंगे। हाँ, हम उसकी अनट्विस्टिंग कर देंगे। ओवरेक्टमी सिर्फ तभी करनी है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो, जैसे नेक्रोसिस हो या हेमरेज हो, वरना जब थीकल सिस्ट होती है उसको कोई इतना खास खतरा नहीं है अंटिल अनलेस तो चॉकलेट सिस्ट ना बन जाए। बेसिकली अगर थीकल सिस्ट है तो अपने आप रिग्रेस हो जाएगी जब बीटा लो है, ठीक है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है। परंतु अगर वो चॉकलेट सिस्ट बन गई तो हम ओवरेक्टमी करेंगे, अदरवाइज अगर वो ट्विस्टेड है तो हम उसको अनट्विस्ट कर देंगे, बस यही करेंगे। ओके और देयर कुड बी एस्पिरेशन ऑल्सो। अजीब है। मोरल प्रेगनेंसी में इंस्ट्रक्शन तभी करना है जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो, एज 40 से ज़्यादा हो, अनकंट्रोल हैमरेज जो इन्वेजिव हो गया हो, परफोरेशन हो जाए, तभी करना है, वरना नहीं करना। वरना तुम सक्शन एंड इवैक्यूएशन ही करोगे। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मोरल प्रेगनेंसी में, ठीक है, तब जाके तुम करोगे उसकी सेल्फ इंजेक्टमी। है सेल्फ इंजेक्टमी है, हिस्टेरेक्टमी।
3 कर सकते हैं, आने चाहिए, तब तक मैंने वीकली करना है, उसके बाद मैंने मंथली करना है फॉर 6 मंथ्स। मोलर प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं है, हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, न्यूट्रिएंट परफोरेशन का मैं श्योर नहीं हूँ। तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन बचा, मतलब बाकी सब हो सकते हैं। प्रीक्लेम्शिया भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, और यूट्रिन परफोरेशन भी हो सकता है। इनवेसिव मोड, अगर हम मोस्ट कॉमन जेस्टेशन न्यूप्लास्टिक डिजीज नॉन न्यूप्लाज्म देखें, जेस्टेशन न्यूप्लास्टिक न्यूप्लाज्म देखें, आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी आता है इन्वेसिव मोड, परंतु आफ्टर फुल टर्म डिलीवरी आता है कोलेकार्सिनोमा। ओके,
मेरिग्नेंट चेंज कब होगा? 2 है, 3 है, 1 2 3 1 तो है ही है, 2 भी है, 1 2 1 5. Would you not recommend to her? You would not recommend IUCD to her. Shit, I didn't read the full question. And the preferred method is oral contraceptive, progesterone, and baby method. Low risk is less than 6. और इसमें वो लिवर और ब्रेन को प्रेफर करता है. Most common is lung. Least common is लंग के बाद वजाइना. Stage 3. One confined to the uterus. 2 genitals. 3 lungs. 4 other organs. You can write that here.
इमाको, इसको कौन सी रीजन कहते हैं? बैग्स ओरिजिन, मतलब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ना। Arises from implantation site. That is intermediate trophoblast. एक्चुअली लोअर तो मास वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये समथिंग रिलेटेड टू प्लेसेंटा है, तो इसमें से हिस्टेरेक्टमी ही की जा सकती है। नाइस। Three.